In the last lecture, we have studied about principal curvatures. Now, depending upon principal curvatures, we are defining different type of curvatures. First curvature is simply the sum of principal curvatures. As principal curvature is given by the quadratic equation h square kn square minus en plus gl minus 2fm kn plus t square is equal to 0. So, from here, sum of principal curvatures is simply the sum of the roots of this quadratic equation, and that will be En plus Gl minus 2Fm divided by h square. For any surface in terms of first and second order fundamental magnitudes, we can define first curvature of the surface. Second curvature or the Gaussian curvature. Is the product of principal curvatures, and from the quadratic equation it is given by t square by h square, or in more simplified form this is ln minus m square divided by Ez minus f square. Third is mean curvature. Mean curvature is simply arithmetic mean of principal curvatures, that is half of Ka plus Kb. That is again in terms of sum of the roots, this is half of first curvature, that is En plus Gl minus 2Fm divided by Ez minus f square. Some more properties depending upon principal curvature. The term is minimal surface. A surface is said to be minimal surface if its mean curvature is 0. Mean curvature, that is half of Ka plus Kb or half of En plus Gl minus 2Fm divided by Ez minus f square. For a surface to be minimal, this mean curvature must be 0, or simply En plus Gl minus 2Fm is equal to 0. If a surface satisfies this condition in terms of first and second order fundamental magnitude, then the surface can be said as minimal surface. For example, check whether the given surface is minimal or not. That is u cos v, u sin v and Cv. You have to check whether the given surface is minimal surface, that is it satisfies this condition or not. Next is umbilic point. A point on a surface is said to be umbilic where first and second order magnitudes are in same proportion, that is L by E is equal to m by f is equal to n by z. A point on a surface is said to be umbilic point if first and second order fundamental magnitude are in the same proportion. Now, next term is lines of curvature. Before that, we will define principal directions. In the last lecture, we have studied that normal curvature is direction specific and it will have different values in different directions, and also will have extreme values of curvature in a particular direction, that are the principal curvatures, and those directions are called the principal directions. We have derived the necessary condition for a function kn of lambda
to have extreme values as Kn is equal to L lambda square plus 2m lambda plus n divided by E lambda square plus 2f lambda plus z. Recall this equation, जहाँ से हमने इसको डिराइव किया था, इसको हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ L lambda plus m divided by E lambda plus f by differentiating this k n dash lambda is equal to 0. ये दो रेशियोज हमारे पास आए थे m lambda plus n divided by f lambda plus z. ये दोनों इक्वेशंस हमने यूज़ की थी. फर्स्ट इज E k n lambda plus f k n माइनस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं L lambda माइनस ऑफ m इज इक्वल टू 0. So is f k n lambda plus z k n minus m lambda minus n is equal to 0. Using these two last equalities, we have L lambda plus m by E lambda plus f will be equal to m lambda plus n divided by f lambda plus z, where lambda denotes the ratio du by dv. Using lambda as du by dv, L du plus m dv divided by E du by dv, that is E du plus f dv, will be equal to m du plus n dv divided by f du plus z dv. By cross multiplying and simplifying, fl du square plus fm du dv plus zl du dv plus zm dv square will be equal to em du square plus en du dv plus fm du dv plus fn dv square. fm du dv, fm du dv, du स्क्वेयर की टर्म्स हमने इकट्ठी की, fl माइनस em du स्क्वेयर प्लस gl माइनस en du dv plus gm minus fn dv square is equal to 0. That is a quadratic differential equation in variable u and v will denote two family of curves that denotes the two principal directions. This is called principal directions, and lines of curvature being the curves on the surface whose direction is along the principal direction. This differential equation also denotes the lines of curvature, because lines of curvature हमारे पास क्या हैं, ऐसे curves on the surfaces जिनके हर point के ऊपर direction किसके along होगी, along the principal directions. So they indirectly represents the principal directions on a surface. So line of curvature will be given by this. A simple tool, that is dv square minus du dv and du square. First order fundamental magnitude, that is EFZ, and L second order fundamental magnitudes LMN. This is for remembering, that is dv square into
Fn minus Gm minus of du dv into Gl minus En plus du square into Em minus Fl, that is equal to 0. So this determinant tool will be equal to 0. ये सिर्फ याद रखने के लिए है. दिस इज सिंपली नेगेशन ऑफ दिस. ठीक है, माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यही टर्म आपके पास आ जाएंगे. So to find differential equation of lines of curvature or principal directions, we have Fl minus Em du square plus Gl minus En du dv plus Gm minus Fn dv square. Now we had the condition of orthogonality कि ये डबल फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट्स ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स ऑन अ सरफेस गिवन बाई से पी डी यू स्क्र प्लस क्यू डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्र इज इक्वल टू 0 ऑन अ गिवन सरफेस. तो वो हमारे पास क्या थी, ई आर माइनस एफ क्यू प्लस जी पी मस्ट बी 0. The necessary and sufficient condition that this double family of curves represent an orthogonal family of curves on a given surface is given by ER minus FQ plus GP is equal to 0. We test this family of curves for orthogonality where P is FL minus EM, Q is ZL minus EN and R is ZM minus FN. So ER, that is E into Gm minus Fn minus of Fq, Q is Gl minus En plus Gp, P is Fl minus En, that is Egm minus Efn minus Fgl plus Efn plus Gfl minus Egm, and that vanishes, that is equal to 0. That means the two principal directions on any of the surface will always represent a orthogonal family of curves, a double family of curves which are orthogonal to each other. या आप ये भी कह सकते हैं कि lines of curvature on a surface always represents a double orthogonal family of curves. Next is a result depending upon the Gaussian curvature. It states that the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a surface to be developable is that its Gaussian curvature is 0. Gaussian curvature हमने डिफाइन किया था. Gaussian curvature क्या था, प्रोडक्ट ऑफ principal curvatures, and that is given by t square by h square or simply ln minus m square divided by Eg minus f square. So we have to prove that necessary and sufficient condition for a surface to be developable is that its Gaussian curvature is 0. First of all, developable surfaces हमारे पास क्या थे, envelope of one parameter family of planes. And are generated by tangent lines to the edge of regression to the osculating developable.
and that edge of regression was the curve itself. Envelope of one parameter family of planes, and that are generated by tangent lines to the edge of regression to the oscillating developable, and that edge of regression was the curve itself in case of oscillating developable. So in simple words, these are the surfaces which are generated by the tangent lines to the curve. So first of all, let us consider that this is a developable surface. Being a developable surface, it is generated by the tangent lines. Let any current point on this surface will be equal to some particular point on the surface. किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन से जो जनरेट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट आर की हम बात कर रहे हैं, और ये जो भी सरफेस हमारे पास जनरेट होगा उसका कोई भी करंट पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं. Then this vector r minus r is tangential to the curve because it is generated by the tangent lines. So r minus r will be along the tangent vector. So r minus r will be equal to some lambda times of t, where r, this point is the function of arc length. Obviously tangent vector is also a function of arc length. So this capital R is a function of two parameters, represents a surface. First is arc length and second one is lambda. R as a function of S plus lambda, T as a function of S. Now we are to prove that its Gaussian curvature is 0. Gaussian curvature is 0 का मतलब ln minus m square divided by Eg minus f square is equal to 0, or simply ln minus m square, h square is always non-negative, so ln minus m square is equal to 0. हमें ये प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज r डैश प्लस लैम्डा एज इट इज t डैश. r डैश वी नो दैट is the unit tangent vector, and t dash by Serret-Frenet formula is given by kappa n. So this is unit tangent vector t plus lambda kappa into n cap. इसी तरह से हमने इसको लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट विल बी यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ln माइनस एम स्क्वेयर के लिए हम बात कर रहे थे. तो हम क्या करते हैं, r1 को फिर से 1 के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज़ इसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं. t को s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट इज़ t डैश प्लस लैम्डा एज इट इज़. एक बार कापा को हमने आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, n एज इट इज़ plus kappa as it is n dash, and using the Serret-Frenet formula. ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इस सारी डेरिवेशन में. r dash is equal to t, t dash is equal to kappa n, b dash is equal to minus of tau n, and n dash is equal to tau b minus kappa t. So using all these results, t dash is kappa n plus lambda kappa dash n cap plus lambda kappa into n dash. N dash is tau b minus kappa t. Summing up, k plus lambda k dash into n cap plus lambda kappa tau to b cap minus lambda kappa square t cap. So is r12 या r21 will be equal to, इसको हम लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे या इसको s के विद रिस्पेक्ट. इसको लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो कापा n, या फिर इसको हमने s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो t डैश, एंड t डैश विल अगेन बी कापा n.
सो इज R22। टी को लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट इज 0। नाउ सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ln माइनस m स्क्वेयर, so L, m and n, as we all know, will be equal to r11 dot unit normal to the surface, r12 dot n cap, and so is r22 dot n cap. So we require this unit normal to the surface. This unit normal to the surface will be r1 cross r2 divided by magnitude of r1 cross r2. r1 cross r2 in the NBT system will be given by n, b and t. r1 के components n, b and t की terms में lambda k cap and 1, that is lambda k cap 0 and 1. r2 के components 0, 0 and 1. That will be n cap इंटू 0, ठीक है, या डायरेक्ट निकाल लें इसको हम, एक बार इस टर्म्स में करते हैं, n cap 0 माइनस 0 प्लस b cap इंटू 1 माइनस लैम्डा कापा एंड सो इज प्लस t cap इंटू 0। तो ये हमारे पास माइनस लैम्डा कापा b, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया तो n कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज b कैप। और वी कैन r1 क्रॉस r2, r1 था हमारे पास t कैप प्लस लैम्डा की n कैप क्रॉस r2, r2 था हमारे पास t, ये r1 क्रॉस r2, t क्रॉस t 0, n क्रॉस t एज माइनस ऑफ b, दैट इज लैम्डा के b कैप, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस विल बी माइनस ऑफ b कैप। क्लियर? नाउ वी नीड सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, दैट इज ln माइनस m स्क्वेयर। l इज r11 डॉट n, r11 डॉट n, n कैप हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ b कैप, यानी इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, b कैप के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई करेंगे। n डॉट b 0, t डॉट b 0, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, n डॉट b 0, t डॉट b 0, सिर्फ ये कंपोनेंट हमारे पास बचेगा b डॉट b एज माइनस ऑफ 1, दैट इज माइनस लैम्डा कापा टाउ इंटू b डॉट b, दैट इज 1, ठीक है। इसी तरह से m हमारे पास क्या है, r12 डॉट n, r12 इज के n कैप डॉट b, दैट इज 0, n is again r22 dot n, that is again 0. So जब हमने ln माइनस m स्क्वेयर निकाला, n and m being 0, ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया, 0. So if we are given that the surface is developable, then this condition necessarily holds, that is ln minus m square is equal to 0, or we can say for a developable surface Gaussian curvature is always 0. Now for the converse part, let us consider ln minus m square, that is the Gaussian curvature, divided by Eg minus f square is equal to 0, or simply ln minus m square is equal to 0. r1 dot n is equal to 0, r1 is tangential to the surface and n is the unit normal to the surface, so is r2 dot n is equal to 0. By differentiating these two identities with respect to u and v, we derive r1 dot n1, r1 as it is, n का differentiation 1 के with respect, plus r11 dot n is equal to 0,
and that is L. So R1 dot N1 will be equal to minus of L, and on the same line R1 dot N2 will be equal to minus of M, and R2 dot N1 will be equal to minus of M, and R2 dot N2 is equal to minus of N. इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आप एक बार u के विद रिस्पेक्ट और एक बार v के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चारों रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। इन चारों रिजल्ट्स का हम यूज़ कर रहे हैं ln माइनस एम स्क्वेयर को हम इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस माइनस साइन को हम ln दैट इज़ प्लस ऑफ, ठीक है, तो माइनस एल इंटू माइनस एन दैट इज़ प्लस ऑफ ln। तो हमारे पास क्या आ गया R1 डॉट N1 एंड R2 डॉट N2। इसी तरह से हमने m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दैट इज R1 डॉट N2 एंड R2 डॉट N1। By Lagrange's identity, this is R1 cross R2 dot N1 cross N2। वेक्टर अलजेब्रा का रिजल्ट है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट की टर्म्स में लिखते थे दैट इज R1 डॉट N1 एंड R2 डॉट N2 माइनस R1 डॉट N2 एंड R2 डॉट N1 कैन बी रिटन एज दिस। हमें ln माइनस एम स्क्वेयर गिवन है टू बी ज़ीरो, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। R1 क्रॉस R2 कैन बी रिटन एज, क्योंकि यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस हमारे पास क्या था R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2 एंड दैट इज H, और सिंपली Hn will be equal to R1 cross R2. By using this value, we have Hn dot N1 cross N2 is equal to 0, or simply H into scalar triple product of N, N1 and N2 is equal to 0. That is N, N1 and N2 is equal to 0. Now possibilities, either one of these is 0. First is n is the unit normal to the surface, cannot be 0. Now n dot N1 cross N2 is equal to 0. Second possibility, n and N1 cross N2 are orthogonal, but n1, n dot N1 is equal to 0. डेरिवेटिव्स ऑफ n में हमने ये दोनों कंडीशंस डिराइव की थी कि n हमारे n1 के भी ऑर्थोगोनल होगा और n2 के भी ऑर्थोगोनल होगा, और बाय विन-गार्टन्स इक्वेशन n1 और n2 कहाँ होंगे, टेंजेंट प्लेन के अंदर, ठीक है। तो n1 क्रॉस n2 इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन, normal unit normal to the surface is also perpendicular to the plane, so these will be parallel vectors, so this cannot be orthogonal, so n cannot be 0. N is not orthogonal to n1 cross n2, that means there are only three possibilities left, either n1 is equal to 0, or n2 is equal to 0, or this cross product will be 0 if n1 is parallel to n2. फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, लेट अस कंसिडर n1 is equal to 0. n1 is equal to 0 means curly n by curly u is equal to 0. Consider the equation of the tangent plane, that is r minus r dot n is equal to 0. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, इसको हमने u के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया, दैट इज r माइनस r एज इट इज डॉट n1 प्लस n एज इट इज r माइनस r का डिफ्रेंशिएशन u के विद रिस्पेक्ट, दैट इज n डॉट r1 will be equal to 0. ठीक है, that means r minus r dot n1, n1 हमें 0 गिवन है, 0, n is the unit normal to the surface,
and r1 is tangential to the surface, that is 0. That means curly by curly u of this r minus r dot n equation of the tangent plane is 0, means this tangent plane is independent of u, that is a function of only one parameter, say v, and developable surfaces are generated by the single parameter family of planes. So is for second condition, n2 is equal to 0. हम इसको v के with respect differentiate करेंगे on the same lines. This will only be a function of u. Lastly, if n1 is parallel to n2, if n1 is parallel to n2, then either n1 can be written in terms of n2 or n2 can be written in terms of n1. Using the above argument, r minus r dot n will always a function of either u or v. So in all these three possibilities, these tangent planes are functions of single parameter, either u or v. So the surface is developable. Thank you.